Hello students, good morning all of you. And in previous video I have solved some numerical problem of exercise 3.3 which is based on the method of finding the square root by long division method. So today it is the time for solving some word problem which is also based on the method of square root by long division method. So let's start. Question number 5 is the area of a square playground is this decimal number 1, 10, 100,000, 186.3225 square meter. Find the length of one side of a square. Okay, so student, this question is based on the your chapter area and perimeter which you have studied in class 7. That what is the formula of area of the square and what is the formula of side of the square. So recall the formula of area of square. Area of square is side square. Okay, area of square is side square, and length of side of square is under root area. So both the formula you have learned in class 7. So apply this formula for finding the length of the side or with the help of area of this square. So we have to write given area of square playground is equal to 186.3225 square meter. Okay, then length of one side in square, all sides are equal. There are 4 sides in the square. So if you get the length of one side, then all the sides are also same as this side. Okay, length of one side of square is equal to, what is the formula? Under root area. It means under root 186.3225. So student, basically this is the decimal number and it is also a proper square number. So we have to use the long division method, because I have explained that if you want to find the square root of a very large number, then it is you have to apply the method of long division method, because it is less time consuming. So here we can write this number like this, and you are all know about what is the procedure. First of all, you have to make a pair like this and guess the square of the number, but which square of the number which is nearest or equal to the number. Here 1 is only number which I know make a pair, so you have to write 1 square is equal to 1, 1 square is equal to 1, and you have to add this number. 1 minus 1 is 0, and you have to write this pair 86, and you have to write 3 3 is 9, 3 2 is 6, and to write here 3 also 26, 6 minus 16 minus 9 is 7, and here 7 minus 6 is 1, and put the decimal here because this is a decimal number, and write this pair also. Now again you have to guess that which square number is nearest or equal to this number, including this number 26. If we multiply 6 6 36, 6 6 36, and 3 39, 6 2 12, and 3 15. Okay, then we will get 15 1596, and you have to add this number
6, 12, 272, and 12 minus 6 is there are some space are very less, so we have to write again this question, the solution of this question. Given the area of half a square is equal to 186.3225 square meter, then length of one side of square is equal to, what is the formula? Under root area. It means 186.3225 square meter. Now we have to solving this. We have to find this square root by Young-Usual method because it is less consuming. 1 here also write 112, 110, 1 minus 1 is 0, 86, 3 is a 9, 3 2 is 6, 3 you have to add 7 and 1. Put the decimal because it's a decimal number. 3 2 6 is the 36, 3 get 6 is the 36 and 3 39, 3 get 6 to the 12 and 3 15. You have to add this number 12, 7 and 2. 12 minus 6 is 6, and here 12 also. 12 minus 9 is 3, and here 6 minus 5 is 1, and 1 minus 1 is 0. 6 is 12, 9 3 12, and 1 13, 5 1 6 and 7. Now you have to write this pair, and if we write here 5, then 5 is 25, 2 carry 5 2 is 10 and 2 12, 1 carry 5 7 is 35 and 6, 3 carry 5 2 is 12, 5 2 is 10 and 3 13. So there are, the remainder is 0, and we will get after adding this number 5 5 10 and 3 here. Okay, so student, the answer of this question is 13.65 meter. Okay, so before moving on next question, pause the video to note it down in the copy or take a screenshot. Now student, we are moving on next question. Question number 6 is basically belongs on the concept of right angle triangle and Pythagoras theorem. Pythagoras theorem you have studied in class 7, that in right angle triangle the Pythagoras theorem is saying that the hypotenuse square is the sum of the base square and height square. Okay, so we have to apply that concept for solving this question. So let's start. You have to make a triangle here, right angle triangle, and this longest side is called hypotenuse. Okay, this longest side is called hypotenuse, this side is called height, and this side is called base or altitude. This side is also called altitude भी कह सकते हैं और हाइट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, and you have to find the length of this hypotenuse. So from Pythagoras theorem
सिंस आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है फार्मूला बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला which is you have studied in class 7, that hypotenuse is equal to under root base square plus altitude square। तो बेस इसमें कितना है 8 और एल्टीट्यूड कितना है 7, यानी 8 स्क्वायर इज 64, 7 स्क्वायर इज 49, then we will get 9 4 13 and 6 4 10 and 1 11, 9 4 13 6 4 10 and 1 11। now you have to you have to find the length of hypotenuse corrected up to 2 decimal places। So 2 decimal places means this is not a perfect square number, so for every non-perfect square number you have to find, if you want to find the square root of non-perfect square number, then it is this line must be included, because you are all know about that स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए 2 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस ये जो लाइन है ये इंक्लूड कर दी जाती है, ठीक है। तो हम इसका जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉन डिवीजन मेथड लाइक दिस 113 टू मेक अ पेयर 13, देन 1 1 2 1 minus 1 is 0। okay, so here 13 is the next pair। so if we guess any number like this, then it is very greater than 13 is less than this number 21। बच्चों ये जो 13 है, अगर हम किसी भी नंबर से हम इसको स्क्वायर लेके और इसको हम इंक्लूड करेंगे तो ये हमेशा बड़ा ही होगा, तो ये जो है एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 यूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ 0 पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेसिमल लगाएंगे तो 2 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ 2 0 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद हम स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए 6 से करते हैं, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका। बच्चों ये मेथड आपको जो है कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हम 0 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 इंक्लूड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। 0 पुट करेंगे तो 0 इंक्लूड करना पड़ेगा इधर, और फिर ये 20 आपका नंबर 20 हो गया, ठीक है। 20 नंबर इंक्लूड करके हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर से गेस करना है जो इसके नियरेस्ट हो 1300 के। तो 6 6 जा 36 and 6 2 जा 12, दिस इज द नियरेस्ट नंबर। 6 6 12, 10 minus 6 is 4 and 9 minus 3 is 6। देखते हैं 3 से कर ले जाए, फिर 3 से और फिर 2 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डेसिमल लग चुका है, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6। तो इस तरह से ये इसके नियरेस्ट नंबर है, क्योंकि 5 4 से ले जाएंगे तो 4 2 जा इधर 2 है, 4 2 जा 8000 में नंबर आएगा जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10 minus 9 is 1, 9 minus 6 is 3, 3 minus 3 is 0, 3 3 6 2 1 2। बच्चों ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा जो है रिजल्ट आ गया, तो हम लिख सकते हैं दिस इज द आंसर ऑफ फाइनल आंसर 10.63 सेंटीमीटर। ओके, so student, before moving on next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving another word problem, that the product of a number multiplied by itself is 36.6025, find the number. So student, this is the example of unknown quantity of, you have to find unknown quantity. So for solving this type of question, you have to assume a variable for
for finding the unknown number. Okay, so let's start. First of all, you have to assume let the required number be, let the required number be x. Then after, according to problem, then from question, के अकॉर्डिंग देखिए, a नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ का नंबर है, तो मतलब एक नंबर है x जो हमें नंबर निकालना है उसको हमने x मान लिया है। अब इस नंबर को मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ का मतलब फिर इसी से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है 36.6025। तो x इंटू एक्स का मतलब होता है एक्स स्क्वायर। x इंटू एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है, 36.6025। अब ये नंबर भी थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इसको हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इस तरह से 36.6025। मेक अ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ पेयर एंड 6 6 36, 6 6 12। तो यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ भी डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम 60 ये पेयर लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम ये 12 इंक्लूड करके और कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर को हम जो है गेस करेंगे तो 60 क्या है, बहुत छोटा है, 60 बहुत छोटा है। देखिए मान लीजिए 12 को इंक्लूड किया और 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना आ गया 121। तो ये 121 जो है बहुत बड़ा है 60 से, तो हमें इस पेयर की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो ये 25 पेयर अब हम इजीली लिख सकते हैं, लेकिन ये 0 पुट करने के में ये ध्यान रखना है कि ये 0 भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर गेस करिए इसमें 120, मान लीजिए हम 6 से गेस करते हैं, 6 6 36, 6 2 12, 6 1 6 1 7। तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो 5 से ले जाएंगे, 5 5 25, 5 2 10 एंड 1 करिए, 5 1 5 और 1 6। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, 5 5 25, 5 2 10, 5 1 5 और 1 6, 5 5 10। तो इसका आंसर हमें मिल गया 6.05 is the answer. So students, I hope you are all understand that how can we find the square root by long division method of decimal number. This is the decimal number, and some previous formula also have been used for solving this question, like area of the square, length of side of the square. What is the formula of length of the side of the square is under root area. And Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? In right angle triangle, the hypotenuse is equal to the square root of the base square plus altitude square या height square or height square. And some basic formula, some basic concepts also have been used. So student, question number 8 is the last question which you have to try to solve by yourself. So this is the homework of today's homework is do question number 8 of exercise 3.3. So thank you very much for being with us.